Assalamu alaikum. This is Professor MATIULLAH back with new video lecture. आज हम डिस्कस करेंगे नए पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बेसिक्स को आज समझने की कोशिश करेंगे, कुछ डेफिनेशंस को, कुछ कीवर्ड्स को, और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में उन्हीं कीवर्ड्स को फर्दर डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे और इनके आपस में जो रिलेशनशिप है, जो जर्नी है फ्रॉम डीएनए टू क्रोमोसोम या क्रोमेटिन, वो सब हम डिटेल से देखेंगे। सो फर्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द डीएनए। The DNA stands for deoxyribonucleic acid, and it is also responsible for transferring genetic information from one generation to the other. We know the very basic that it is double-stranded molecule that is made of 4 nitrogenous bases, namely number 1 cytosine, number 2 guanine, and then we have thymine, and the last one is the adenine. तो ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना है, जिसमें एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल और साइटोसिन और गवानीन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। The DNA starts its information with the help of protein called as histone proteins. चूंकि DNA एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सो इट हैज़ टू कॉइल, और कॉइलिंग के लिए जो हेल्प आउट करता है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटीन, एंड नेमली दैट इज हिस्टोन प्रोटीन. So DNA and protein, they both coil, and the journey continues from 2 nanometer to 10 nanometer onwards to 30 nanometer, and then we have the last diameter that is called as 700 nanometer. जैसे इस पॉइंट पर जर्नी आके रुक जाती है, so we get the structure, the name that is called as the chromatin. Now sometimes students जो है वो chromatin को confuse कर लेते हैं दूसरे वर्ड के साथ, that is called as chromosome. अब अगर chromatin की बात की जाए, so chromatin is the unpacked structure, और अगर क्रोमोसोम की बात की जाए सो इट इज़ पैक्ड स्ट्रक्चर. पैक्ड स्ट्रक्चर से मुराद कि इट इज़ टाइटली पैक्ड, इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंडेंस्ड. जब भी सेल डिवाइड कर रहा होता है, सो द क्रोमेटिन it tightens into the structure that is called as the chromosome. और जब सेल डिवाइडिंग फेज में ना हो, so the same chromosome लूज हो जाता है, and it forms the chromatin. So DNA plus protein forms
क्रोमेटिन, और इसी तरह ये कब होगा, जब सेल डिवाइड ना कर रहा हो, सेल इजंट डिवाइडिंग, एंड द क्रोमेटिन फॉर्म्स क्रोमोसोम। ये कब होगा, when cell is dividing. So as a summary, DNA, we'll be discussing it in detail, the Watson and Crick model. So it's basically the carrier of genetic information through its nitrogenous bases, and further it forms, जैसे ही ये कॉइल होता है, कंडेंस होता है, टाइटन होता है प्रोटीन के साथ मिलकर. So up till 700 nanometer the diameter, it forms the structure that is called as the chromatin. Chromatin and chromosome both are same in chemical composition, लेकिन जो differentiation है वो इनके फेज में है कि जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है तब हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मिलता है, टाइटली पैक्ड, टू कंडेंस्ड. और जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, सो देन वी गेट द क्रोमेटिन. बोथ क्रोमेटिन and chromosome are made up of the DNA and protein, but this information from one generation, like from parents to the offspring, it flows through the structure that is called as the genes. Now what are genes? Genes are basically sequences of nucleotides, और यही जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द करेक्टर्स from one generation to the other. So in next lecture we'll be discussing about the basic idea of a gene. मेंडल ने इसे फैक्टर का नाम दिया था, और इसी जीन के बारे में हम बात करेंगे कि जीन्स बेसिक्स में किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, और क्या जीन्स किन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरते हैं, लाइक डीएनए इनटू मैसेंजर आरएनए, एंड देन वी हैव द प्रोटीन्स जो कि स्ट्रक्चरल रोल फंक्शनल थे. So we'll be discussing it in part 2, genetics, basic of genetics part 2, the basic idea of gene. Thank you.